Assalamu alaikum students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और हमारे पास चैप्टर है जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे जी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को। स्टूडेंट्स, मैटर हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ in the state of solid, so the branch of physics which deals with the physical properties of solids or characteristics of solid is called solid state physics. Student, the interatomic distance in solids very small. They are 10 to the power 22 to 10 to the power 23 atoms per cubic centimeter. In solid state, the ions, atoms and molecules are closely packed together under a covalent bond or ionic bonds. The applications of solid state physics are countless, but it uses in the development of transistor, magnetic tape recording, supercooling, nuclear particle detector and solid state laser are worth maintaining। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। On the basis of structure, solids are classified into two categories. First one is the crystalline solid, while second one is the non-crystalline or amorphous solids. So student, what is mean by crystalline solid? The solid in which three-dimensional infinite regular arrangement of atoms, ions and molecules are present are called crystalline solids. Students, they have definite melting and boiling point. For example, मेटल्स, कॉपर, ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि आयनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें ज़िरकोनियम ऑक्साइड। और इसी तरह बात कर ली जाए अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर शेप पैटर्न है लाइक NaCl का, तो वो सारे के सारे क्या हैं जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है जी। तो दे आर द सॉलिड्स इन विच द बेसिक consistent atoms, ions or molecules are arranged in certain periodic pattern. These types of solids have perfect periodicity in atomic size or structure. The atoms or molecules are arranged in regular array in 3 dimension. Crystalline solids are free from imperfection or defects like impurity of atoms, lattice vacancy and dislocation of atoms. It should be noted that the presence of imperfection or defect may cause changes in the physical properties of solids. Next are the characteristics of crystalline solids. Crystalline solids have sharp melting point. Crystalline solid exhibits an isotropic, ठीक है जी। isotropic क्या होती है? they show different properties along different direction. Example है जी हमारे पास light possess with different velocity in different direction of crystalline solid. This means that such crystals show different diffractive indexes along different direction. Similarly, heat and electricity are conduct easily in one direction, but little effect can be deleted in the direction। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास amorphous solids। amorphous solids स्टूडेंट्स क्या होते हैं? The solids in which no regular arrangement of atoms, ions or molecules are present, they are called glassy solids। ठीक है जी, इन्हें हम glassy solids भी कहते हैं। तो देखें, in amorphous solid, constituent atoms or molecules are arranged more or less randomly with respect to one another। ठीक है। It may be noted that arrangement of atoms is not entirely random. There is a certain order extending over a relatively short distance। ठीक है जी। तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि क्रिस्टलाइन में हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। amorphous solids have short range order and long range order in absence. Example are glass, rubber, plastic। ठीक है जी। Characteristics of amorphous solids. Amorphous solids have no definite melting point. They gradually melt with increase in temperature. Amorphous solids show some properties along with different direction। ठीक है जी। और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। ठीक है जी। Similarity between amorphous solids and liquids. In liquids, the atoms or molecules have a random distribution. Atom in liquid drift from one place to another place, but the random distribution persists. The amorphous solids or liquids have a strong similarity that
why amorphous solids sometimes refer as super cooled liquids, ठीक है, या हम solid liquids भी कहते हैं amorphous solids को, ठीक है जी। और ये हमारे पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम का कर्व है, ठीक। ये कर्व जो है इसमें टेम्परेचर में ग्रेजुअली डिक्रीज आ रहा है टाइम इंक्रीज करने से सॉलिड स्टेट तक, फिर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद फिर ये जो स्टेट है लिक्विड स्टेट है, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेट में फिर टाइम इंक्रीज करने से टेम्परेचर में क्या आ रहा है जी, डिक्रीज आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग फोर्सेस सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर्स have free electrons. These electrons are loosely bonded with the nucleus. In metals we have high electrical conductivity, high thermal conductivity, high optical reflectivity because of free electron present in them. Metallic bond is weaker than the ionic and covalent bond, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, these are the substance which do not have free electron. Non-metals are insulator and have bound electrons, ठीक है जी। Non-metals are further subdivided into three close according to the arrangement of valence electron of constituent atom with such solids are formed. Number one is the ionic crystal, second one is the covalent crystal, third one is the molecular crystals. सबसे पहले है जी आयनिक क्रिस्टल्स। इन सच क्रिस्टल्स द इंटरएटॉमिक फोर्स इन द आयनिक बॉन्ड which arises due to electrostatic forces between positive and negative ions, for example NaCl or KCl, ठीक है जी। when such crystal is formed the valence electron of Na positive are completely transferred to chlorine. The binding force is so strong that even at high temperature the attractive bond between the ions does not break. Therefore ionic crystal have very high melting point. Near melting point the ions might becomes mobile of an electric field in applied to such waste substance. These are no free electrons in ionic crystals, therefore they exhibit pure electrical and thermal conductivity due to lack of free electron. The crystal are poor absorber of light. Only light energy photons will be able to excite the electron at the filled shell of atoms of sodium and chloride. These crystals are usually transparent visible light, so optical excitation does not take place. The energy greater than the 0.06 electron volt. The crystals are soluble in ionizing solvents such as water. The ionic crystals are brittle, ठीक है जी। brittle क्या होते हैं? substance which break just after a elastic limit, ठीक है। और ductile क्या होते हैं? the substance which undergo plastic deformation until they break. तो the ionic crystals have highest value, ठीक है जी, of heat fusion and heat of sublimation. Next is the covalent crystal. In such crystal, the valence electron of neighboring atom are shared by their atoms in order to complete their outermost shells. The atoms from covalent bonds among them examples are germanium, silicon, diamond, ठीक है जी, for etc. और इन तमाम में जो इनका outermost shell है complete होता है. This can be achieved if two chlorine atoms are joined together by sharing their electron, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक दूसरे के साथ जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो कर ली है। It is to be noticed that the atom taking part in covalent bond shared not necessarily be alike. For example, like hydrogen may combine with chlorine to form HCl, and the bond in the case is also covalent bond. Carbon atom has 4 electrons in the outermost shell which can be
accommodate a total of 8 electrons. In the diamond structure, each carbon atom will form 4 covalent bonds with the neighboring atoms. These atoms provide the effective electrostatic force between the atoms. ठीक है जी, और ये आप देख भी रहे हैं कार्बन का जो एटम है उसने अपने साथ वाले नेबरिंग कार्बन एटम के साथ से इलेक्ट्रॉन शेयर करके म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ये की हुई। ये सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान इन केस ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कोवलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड विच कैन बी सीन बाय कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड डायमंड। ठीक है जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर दैन द आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। ठीक। द कोवलेंट क्रिस्टल आर हार्ड, ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल एंड हैज़ हाईएस्ट नॉन मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए हम डायमंड को अक्सर सर्जरी के टूल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दीज क्रिस्टल डू नॉट एब्जॉर्ब लो एनर्जी फोटॉन्स एंड ट्रांसफर देयर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट लाइक आयनिक क्रिस्टल। मिस्टेक Mistake 3. Though the atoms are tightly bound, yet the valence electrons are not tightly bound by the atoms as in ionic crystal. Therefore, a small amount of energy can start conducting the electrons. That is why they are also known as semiconductors. At high temperature, the crystals show electrical conductivity. These crystals do not absorb low energy photons and therefore are not optically transparent like ionic crystal. Even thermal photons can excite the electrons into outermost shells. Next is student molecular crystals. These are the crystals of solidified gases such as हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है जी, जितने भी नोबल गैसेस हमने डिस्कस की। द बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनर्ट गैसेस also called van der Waals bond. This bond is entirely responsible for binding the atom in inert gases. In solidified inert gases, van der Waals forces are the electrostatic in nature. They arise due to shift of relative position of nucleus and electrons of the atom. As a result, the shift dipole form. Once one dipole is formed, it helps in the producing dipoles in the neighboring atoms. The change of opposite sign in dipole give rise to attractive electrostatic force. Next है इसकी characteristics. The internal stability of atom or molecule is so great in molecular crystal that there is no tendency to lose or even share valence electron with other molecules in the solids. Each atom or molecules of the crystal is stable by itself. Therefore, the binding forces between different atoms and molecules is almost zero. These crystals have very low melting point even at absolute zero. The molecular crystal possess very low electrical and thermal conductivity because of lack of free electron, loosely bonded electrons. अब नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। हीलियम में 2 है, नियॉन में 10 हैं, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8। ठीक है। आर्गॉन में इसी तरह पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8। तो इनका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है जी। इस वजह से ये जो हैं इनके पास कोई लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते और इनकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है काफ़ी लो होती है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।